Hello friends, last lecture we have discussed pH and pOH and also relation between the pH and pOH, and one point is also discussed, that is a pH scale. Okay, now today we are going to start next point, that is hydrolysis of salt. जो आज आपको पॉइंट देखना है, that is the hydrolysis of salt देखना है. First of all, give the heading, what is my hydrolysis of salts? Okay, before this study the hydrolysis of salt, you must know what is my salt. आपको सबसे पहले सॉल्ट एक पता होना चाहिए. फिर what is my salt? The ionic compounds. The ionic compounds formed by the neutralization of base by an acid. इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं. What is my salt? The ionic compound formed by the neutralization of base by an acid. इस स्क्वाड उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, NaOH plus HCl, it gives NaCl plus what? H2O. फिर यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो गया वो कौन सा? आयनिक कंपाउंड्स. देयरफॉर दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं. व्हाट इज माय सॉल्ट? द आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द, किसका न्यूट्रलाइजेशन? बेस. बाय एंड किससे? बाय एन एसिड इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं. नाउ अभी यहां पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट. क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. नाउ लिसन केयरफुली. द सॉल्ट्स formed by the salts formed by the neutralization of the salt is formed by the neutralization reaction between the equivalent amount of acid and base. एसिड एंड बेस. सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है? दी सॉल्ट इज अ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन बिटवीन द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द एसिड एंड बेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस. The salt is classified into the 4 types. ख्याल में रखिए, depending on the nature of the acid and base, there are 4 type of the salt. के कितने टाइप है? There are 4 type of the salts. सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ salts. The salt is formed by the neutralization reaction in between the equivalent amount of the acid and base. Depending on the nature of the acid and base, there are the 4 type of the salt. Salt के कितने टाइप है? 4 टाइप्स है. Now, फिर अभी कौन कौन से टाइप है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे. First one is a salt of strong acid and strong base.
salt of the strong acid and strong base. For example, NaCl, KCl, next NaCN, NaCN नहीं, यहाँ पे लेंगे Na2SO4, next K2SO4, next NaNO3, another example KNO3. All these example is a पूरे के पूरे किसके example है? Salt of the strong acid and strong base. क्योंकि इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या देते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या देते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉल्ट्स. सेकंड वन इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and weak base. Salt of the strong acid and weak base. For example, NH4Cl, copper sulfates. Next one is a AlCl3, FeCl3. Next one is a NH4, NO3. ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल. इज ए पूरे के पूरे किसके एग्जाम्पल है? सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. क्योंकि इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दे आर दी प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. थर्ड वन इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. Salt of the weak acid and strong base. For example, उसका एग्जाम्पल लेंगे. That is the NaCN. Next example KCN. Another example CS3CO Na. Next one is a HCO Na. Or another example is a yes, okay. This is a example. is a पूरे के पूरे किसके example है? Salt of the weak acid and what? Strong base. And last one is a salt of weak acid and weak base. Salt of the weak acid and weak base. For example, ammonium acetate. Next example is a ammonium NH4 taken to CO3 ammonium carbonate. Another one example ammonium cyanides. All this example is a पूरे के पूरे किसके example है? That is a weak acid and weak base. This is the four type of the salt. And these four type of the salt is based on the depending on the nature of the acid and base. That is the first one is a salt of the strong acid and strong base, salt of the strong acid and weak base, salt of the weak acid and strong base, and a last one is a salt of the weak acid and weak base. Okay, now अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. That is a hydrolysis of salt. अभी देखना है. क्या देखना है? Hydrolysis of salt. Give the heading. Hydrolysis of salt देखेंगे. इसकी वजह से मैंने पहले आपको बताया सॉल्ट क्या है और सॉल्ट के कौन कौन से टाइप है. अभी डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखेंगे. फिर what is my hydrolysis of salt? What is my hydrolysis of salts? It is defined as the reaction in which cations or anions react with waters to produce acidity or alkalinity.
इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? द रिएक्शन इन विच द कैटायन और आनायंस is react with water to produce acidity or alkalinity in the solution is called, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अभी उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. Consider the reaction of the salts NH4Cl. Consider the reaction of the hydrolysis of the salt NH4Cl. When NH4Cl is a react with waters to produce NH4OH plus HCl, ये प्रोड्यूस हो गए अकॉर्डिंग टू द आयनिक थ्योरी. अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू व्हाट, आयनिक थ्योरी फॉर आयन फॉर्मेशन. आयन फॉर्म करने के लिए कौन सी थ्योरी अकॉर्डिंग करना आपको, आयनिक थ्योरी. NH4 plus Cl minus plus H2O, it gives NH4OH plus H plus Cl minus. Now cancelling the common term in both sides, Cl minus, ये क्या करना है आपको, कैंसल करना है. Now राइट द नेट इक्वेशन. अभी नेट इक्वेशन राइट करना है. NH4 plus H2O, it gives NH4OH plus H plus. Now in this reaction the cation is a react with the water. यहाँ पे cation किसके साथ रिएक्ट हो गया, वाटर के साथ. एंड टू प्रोड्यूस द, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, एक्सेस H प्लस प्रोड्यूस किया. देयरफॉर द सोल्यूशन इज द नेचर इज द, यहाँ पे सोल्यूशन का कौन सा नेचर है, एसिडिक है. क्यों एसिडिक है? बिकॉज दिस कैटायन इज अ रिएक्ट विद वाटर एंड दे आर प्रोड्यूस द एक्सेस H प्लस इन द सोल्यूशन. देयरफॉर द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज अ, सोल्यूशन का नेचर ही कैसा है, एसिडिक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये पहले क्लियर करो. द रिएक्शन इन विच द कैटायन और आनायन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस द एसिडिटी और अल्कैनिटी. यहाँ पे अल्कैनिटी प्रोड्यूस की है. Therefore that salt is known as hydrolysis of salt. फिर उसका एक्सप्लेनेशन करके मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. फिर NH4Cl को वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसमें का कैटायन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ. एंड दे आर प्रोड्यूस द एक्सेस H प्लस इन द सॉल्यूशन. Therefore the nature of the solution is a, solution का नेचर एक ऐसा है, एसिडिक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स. Salt of strong acid and strong base. ओके, अभी इसका हाइड्रोलिसिस करना आपको. सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. कंसीडर द रिएक्शन consider the reaction of the salt of NaCl. इसकी रिएक्शन कंसीडर करेंगे. कंसीडर द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट NaCl. When NaCl is a react with the, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ. एंड दे आर प्रोड्यूस, दी क्या प्रोड्यूस करता है, NaOH plus what, HCl, that is a strong base and strong acid.
because NaCl is a salt of the strong acid and strong base. When NaCl is a react with waters and they are produced the strong base NaOH and strong acid कौन सा प्रोड्यूस किया उन्होंने HCl प्रोड्यूस किया है अकॉर्डिंग टू द आयनिक थ्योरी. अभी यहाँ पे क्या अकॉर्डिंग कीजिए अकॉर्डिंग टू आयनिक थ्योरी फॉर आयन फॉर्मेशन. Now Na plus plus Cl minus plus H2O it gives Na plus plus OH minus plus H plus Cl minus, cancelling the common term in both sides and rewrite the remaining term. अभी क्या सेम टर्म क्या करना है आपको कैंसलिंग करना है कैंसलिंग द कॉमन टर्म इन बोथ साइड्स and write the remaining net equations Na plus Cl minus and Cl minus. Now H2O it gives OH minus plus what H plus. Okay, now in this reaction no any cation is present. यहाँ पे NaCl में यहाँ पे कौन सा भी क्या नहीं है कैटायन नहीं है. Therefore the solution is the यहाँ पे solution एक कैसा है. Therefore the solution is a neutral because in the air contain the equal number of the OH minus and H plus. इसकी वजह से NaCl का solution का नेचर एक कैसा है न्यूट्रल है. ओके अकॉर्डिंग टू the definition of the hydrolysis of the salt. अभी यहाँ पे according कीजिए according to the definition of the hydrolysis of the salt, the NaCl does not undergoes the NaCl does not undergoes the hydrolysis. NaCl का क्या नहीं होता है hydrolysis नहीं होता है because there is a does not present the any cation. यहाँ पे कोई भी कैटायन या अनायन नहीं है. In there is a form the equal number of the H plus and OH minus. Therefore, according to the definition of the hydrolysis of the salt, the NaCl the solution of the therefore the NaCl is the does not undergoes the NaCl क्या undergoes नहीं करता है hydrolysis नहीं होता by the definition of the hydrolysis of salt. Okay, good day.